Again. Yeah, hi. Hi. Hi, Aashim. Hi, How are you? good. How are you? I'm very good and I'm very happy that I'm finally talking to you because I was waiting really for this day. Because Hi, that's so sweet, Richa. I Thank really loved Taj. That's really amazing series. I am so happy to hear that. Thank you. I'm so glad. या दैट इज एक्चुअली वेरी नाइस और आशिम मतलब आप इतने डिफरेंट अवतार में दिखे हो हम लोगों को बिल्कुल जब हमने कास्ट सुनी थी ना टू बी वेरी ऑनेस्ट तो लगा था हाँ जी। आशिम इतने रोमांटिक है इतने डिफरेंट लुक है एकदम और Hmm. मतलब इतना इंटेंस रोल आपने जो करा है पहले आप बताओ कि कैसे किया मतलब दिस इज रियली अमेजिंग परफॉर्मेंस Thank you so much. I really appreciate it. Thank you very much, Richa. या Uh, यार कैसे का तो मुझे पता नहीं but I'll tell you that this was a very important character for me in my career, the whole trajectory, I feel, because I needed something which was where people would actually recognize me for my work, my acting, my and I feel this was something that had everything for me to give in, right? Like it had romance, it has drama, it had action, it had vengeance, it has everything. So it has so many layers, and I think for an actor, as much as it would be scary, but also in a good way, it also pushes you because you realize that there is so much. This is what an actor's dream character would be when you have so many layers to do. But it could also be like a little daunting because you feel like यार इतना सब कुछ है इतने इतने उर्दू भी है और एक पीरियड ड्रामा भी है और एक्शन भी है कहीं अगर मैं फॉल्टर कर गया अगर अच्छा नहीं लगा बिकॉज ऑडियंस सब पकड़ लेती है camera catches everything so what if like it's so all these thoughts were of course they were there but for me the only thing that was important was to make Salim very lovable you know for people to fall in love with his eyes, his persona, the way he looks at people, the way he treats people, the way he is. Like when he comes on screen, people should just be like, "Yeah, I wish I was Salim." You know. So I just wanted him to be very relatable, and there was no master plan. It was just very honest. I wanted him to be. I wanted it to be a very honest performance, and I didn't want to take inspiration from anyone from the past, and I don't think that I have a place to do that also. But like I wanted it to be fresh. I wanted it to be young. I wanted it to be passionate. I wanted it to be dramatic, and I wanted it to be real. That's what Salim was for me. And I think just keeping all these things in mind, I just I just believed in what my director's vision was and what he wanted out of Salim, and I trusted the captain, and I just went on with whatever he said, and I trusted myself to play this character, and I never doubted that I could play Salim. अगर मैंने सलीम करा है तो मैंने मेरे हिसाब से मुझसे अच्छा सलीम कोई नहीं कर सकता because 100%. it's not like ki, I mean, of course like there's so many brilliant actors everybody's like so good at what they do but for me अगर because I'm working with the Nasir साहब अगर मैं वहां पर if I felt intimidated so I would have never been able to play Salim the way I did but Right. for me it was very important to just to feel like कि अगर मैं सलीम कर रहा हूँ तो ये I have to give my best to this and that's what I did. या एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट कि जब आप इतने सराउंडिंग इतने सारे मतलब इतने सारे एक्टर्स की होती है जो कि मास्टर है अपने अपने मतलब फील्ड में जो उनके बीच में काम करना और इस तरह की परफॉर्मेंस निकालना आशिम मतलब नर्वसनेस हुई कभी या कभी लगा कि जैसे अभी आपने खुद बोला कि अगर मैं एक बार अगर बह जाता शायद तो आप उतना नहीं कर पाते सो अकॉर्डिंग यार टू यू वाज इट इजी टू प्ले इन फ्रंट ऑफ देम और इट टुक सम एफर्ट और क्या मतलब कैसे हुआ ये सब can please define? when there is such a fantastic ensemble cast, I mean, we all know that Nasir Saab is so good at what Yes, he does, and yes, for years of training and doing and acting and being in the industry and still going at it, of course there is that pressure that yeah, I don't want to falter in front of this man, this mm, legend. I mm, what if I'm not being able to perform? And when mm, if I falter then what if how would he think of me and what would there is so many questions that you ask mm, yourself because Contelo, Z5, all these people they've yes, actually believed and mm, put so much money and time and effort into making this show mm, and also
to pre the shoot to also understand that it was their vision, and then for them to believe that I could play a character, a mammoth character like Salim, who could actually stand in front of a Nasiruddin Shah and actually speak to him the way Salim does to Akbar. So these are scenes that it's an actor's delight, but also it could be scary because there are actors who've been doing this for so many years. So for me, that was a bit like initially it was like, yeah, I don't want to be any less than any of these guys. We're peers. And when we come to stage, when we come to the set, when we have to perform, then there is no bada or chota. There is your character and there is my character. और मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज थी कि सलीम कौन है. अब उसके आसपास अकबर है, उसके आसपास दानियाल है, उसके आसपास जोधा है और बाकी सारे लोग हैं. वो सब अपना किरदार निभा रहे हैं. वो सब अपना काम करने आए हैं, जो कि ये भूल के आए हैं कि वो नसीरुद्दीन शाह है, जो कि भूल के आए हैं कि वो संध्या मृदुल है. उनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि मैं अकबर हूँ, और मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, मैं सलीम हूँ. तो अगर आप अपने अपने उस कैरेक्टर के दायरे में रहकर आप ये अपने आप को समझा दे कि आप यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर निभाने आए हैं, और जितने शिद्दत से आप वो कैरेक्टर को निभाएं, वही आपका काम है और वही आपका सच है. तो वही मेरा काम था और वही मैंने निभाया. अगर मैं इफ आई वुड हैव टेकन दैट प्रेशर कि नहीं यार, नसीर साहब के साथ सीन करना है, क्या क्या होगा, मतलब इंटिमिडेट हो जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तो मैं कभी सलीम को प्ले कर ही नहीं पाता. Right. But it was very important for me to actually forget that कि यार, he is Nasiruddin Shah. But actually he's not Nasiruddin Shah, he is Akbar. और अकबर है तो मैं भी सलीम हूँ. ठीक है. तो that was what was in my head. And अगर वो चीज आप ध्यान में रखोगे तो then everything becomes a work of play, then you're just playing, then you're just moving with your characters, and then the scenes are happening, and then because you know the essence of everything. So that way the preparation was very important. You have to understand what Salim, what his life was, where is he coming from, where is he going, what is his relationships, what is his role dynamics with every character. So understanding that was very important. And then uske baad, when you go on set, then it becomes very like, it's like it becomes second nature, because you're going on set as Salim, not as Aashim. Aashim को तो घर रख के आना होता है ना. वो लगा भी हमें, मतलब वो हमें देख के बिलीव ही नहीं हुआ. और मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये टर्निंग पॉइंट है एक ये रोल आपकी लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक? मैम, ये टर्निंग पॉइंट हो या ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है. आई होप हो एंड आई विश कि मेरे इससे मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिले और बहुत काम करने को मिले. बट फॉर मी पर्सनली दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज मैंने जितनी मेहनत करी है शो में, मैं जानता हूँ. और जब होता है ना कि अब इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए एक कैरेक्टर को, तो व्हेन आई रीच दैट पॉइंट, देन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो इसके बाद व्हाटएवर हैपेंस, इट्स द फेट ऑफ द कैरेक्टर एंड द शो इज फॉर पीपल टू डिसाइड. मैंने it's like a baby, right? आप you have this baby inside you for so many months, and then finally when you release it, when you let it go out of your body, then it's there, then it's yours, then it's the world's, then it's for the world to perceive and see how this happens. बट मेरे हिसाब से, मेरे मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस कैरेक्टर को, और मेरे पास सब कुछ है नहीं. तो फॉर मी इट्स लाइक अ रिलीज नाउ. And I hope it becomes a turning point. But for me, like, I'm very proud of the fact, and I'm very happy of the fact that I gave everything to this character, and people actually see it, and people actually recognize it, and they're loving what I did. And for me, that's my biggest reward, and it's my biggest award. Yeah, and it's all visible because we have seen the whole episode and we loved it. And this is not just only the performance, मतलब the way you're expressing yourself through your eyes, and जो आपका जो एक expression था ना सिर्फ चेहरे का, that जी, was really outstanding, Ashim. And I'm not saying कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ. I'm नहीं saying नहीं this नहीं, also. वो तो आपकी आवाज से पता चल जाता है यार. झूठ, जब कोई झूठ बोलता है ना, तो हम समझ आ ही जाता है कि यार ये या फालतू में बिकॉज बोल वी रिव्यू जनरली, तो हमें समझ में आता है कि एक होती है एक्टिंग, एक होती है परफॉर्मेंस, एक होता है एक्सप्रेशन आंखों का, मतलब फेस का. सो ये नेचुरली आ गया या फिर आपने इसमें कुछ एफर्ट डाला? मैम, मेरे आई थिंक हर एक सीन को ना तो अगर आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस, और मेरे ख्याल से लोगों को शायद नोटिस ना भी हुआ हो, बट मेरे मेरे मैं एवरीथिंग दैट आई डिड,
was हम्म premeditated. Like I thought हम्म about, of course, when you enter a space and a scene, things change. आप सोच के आते हो कुछ ऐसे करना है, कुछ वैसा करना है, but हम्म आपकी जो environment होती है वो बदल जाती है. And कभी director बोलता है कि नहीं यहाँ से नहीं वहां से shot लेते हैं. So you have to be very fluid with your craft and your या and what you think of your character, and then you have to be open to whatever the director says, and you have to be understanding of all of that, and keeping all of that in mind, you have to be prepared for whatever's coming your way. Impromptu भी बहुत चीजें होती हैं. But for me, like, I don't think if you notice, but because Akbar, I'm the Akbar's eldest. हम्म If you notice that Akbar has this way of talking. हम्म अनारकली तुम भूल रही हो तुम किसकी हो. हम्म He's got a way of delivering his lines. या So for me, what I did was when I used to look at Nasir Saab and his the way he used to talk, I picked on that and I started. My dialogue delivery was also somewhere that in somewhere close to how he would say his lines and his dialogues. Because हूं तो मैं अकबर का बेटा, तो मेरे पास अकबर के ट्रेड्स तो हैं ही. तो ये सारी चीजें सोच के वो छोटे छोटे नुआंसेस लाना, वो उस वो I was just basically thinking about these things and how would Salim be and how would you transport yourself to that era. और अगर हमें रिलेटेबल बनाना हो और हमें बोलना हो कि यार अगर सलीम इतना मजाकिया है या सलीम को ये सारी चीजें लाना पसंद है, तो उस टाइम पे अगर सलीम को वो सारी चीजें पसंद होगी तो वो कैसे बोलता होगा. या तो एसेंस याद रखिए कि ऑफ कोर्स ये पीरियड ड्रामा है, बट हाउ डू यू मेक हिम रिलेटेबल सो दैट आज की जनरेशन में अगर कोई उसको 15 साल का या 20 साल का या 25 साल का कोई लड़का देखे तो बोले यार ऐसा तो मैं भी करता हूँ. या ऐसे तो जब मैं अपने पापा से बात करता हूँ या अगर मैं खड़ा हूँ मेरे पापा मेरे सामने खड़े हैं मुझे भाषण दे रहे हैं, अब इज टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई वुड जस्ट लुक डाउन और मे बी गिगल अ लिटिल. तो दीज आर, अब उस टाइम पे भी तो ऐसा हुआ करता हूँ. ऐसा तो है नहीं कि मतलब उनके पास जज्बात नहीं थे, उनके इमोशंस सारे बेसिक इमोशंस तो हमारे सेम ही होते हैं ना. जाहिर करने का नजरिया और तरीका अलग हो जाता है, बट टाइम टाइम के हिसाब से आपके इमोशंस नहीं बदलते. हाँ, तो मतलब वो आप भी ह्यूमन थे, वो टाइम पे भी लोग बेसिक ह्यूमन थे। ह्यूमन इमोशंस जो लव रस है वो सारे सेम ही होते हैं, उसको या दिखाने का जरिया बदल जाता है बस. या या तो वो मैंने आई जस्ट मेड श्योर दैट हाउ डू आई मेक हिम इंटरेस्टिंग, हाउ डू आई जस्ट वांट पीपल टू लव सलीम. I want every mother to be like यार हाय मेरा बेटा ऐसा हो, या every brother to be like I want a brother like that, or every lover to be like I want a lover like Salim. you know so that was my and वो honestly जितना मैं कर पाया, मैंने उसको जितनी शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ मैं सलीम को निभाना चाहता था, आई बिलीव दैट आई हैव डन जस्टिस टू इट एंड आई होप दैट लाइक पीपल सी दैट. हुँ। बिल्कुल। और जब हमने सुना कि ताज ये फ़िल्म बन रही है, तो लगा कि स्टोरी बहुत कॉमन है, बहुत कई बार बन चुकी है या बट जब ये हमने देखी तो कई चीज़ें ऐसी थी जो बहुत पहली बार देखने को मिली या ऐसा लगा कि अच्छा ये भी हुआ होगा, तो वो सब कैसे वो जो उतनी बारीकियाँ थी आशिफ़, वो कैसे डाला गया? आई एम श्योर ये यार मतलब इसका मूवी से स्नेह भी तो मैं सिर्फ अपने राइटर्स को देना चाहूंगा, विलियम और जेसन एंड और माय डायरेक्टर को, एंड फॉर देयर विजन एंड व्हाट दे हैव डन, बिकॉज इतना वेल रिसर्च्ड है ना ये रिचा. या इतनी अच्छे से रिसर्च किया गया है. और सबसे मजे की बात है कि ये अंग्रेजों ने किया है. ओके। ये हम यहाँ पर भी नहीं किया, ये उन लोगों ने किया. उनकी रिसर्च इतनी कमाल की थी कि एंड देयर वाज सो मच टू टेल दैट, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज द वे दे हैव टोल्ड द स्टोरी. जो बारीकियत से उसको बताया गया है, जो छोटी छोटी चीजें, मतलब जो खेमे बने हुए हैं कि एवरी दानियाल का एक अपने आसपास उसकी लोग हैं, अबुल फजल है, मेरे साथ में मान सिंह है, और so everybody has their own plots going on, and then all the plots eventually come together and merge, and how that story comes and unfolds, that is the beauty of this. या Eventually it's a drama. It's just a family drama. It's a man who's troubled because he knows that he doesn't want, the way he got his kingdom, he became king when he was 13 years old, or basically he came in very young. Akbar, या 11, when he was 11 years old, he was in the battlefield. उसके बाद 13 साल की उम्र में वो आ गए थे किंगडम में. तो उनको जो उन्होंने राज्य अपना खड़ा किया है, उनको उनको अब जस्ट एज अ नॉर्मल पेरेंट वुड बी लाइक यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने 3 बिगड़े बच्चों को मैं कैसे दे दूं अपना पूरा सौंप दूं अपना पूरा बिजनेस.
मैं तो या आई वांट टू सी हु इज द राइटफुल हेयर टू माय बिजनेस, जो मैंने इतनी मेहनत करी ना। तो इट्स हम्म एक्चुअली अ बेसिक ऑन अ फंडामेंटल लेवल, इट्स अ फैमिली ड्रामा। तो वहाँ हम्म एक बाप जो परेशान है कि यार मैं इसको दूं, ये हम्म बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ शहजादा है। दूसरा हम्म पूरा पागल है, ही जस्ट वांट्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ही उसको इतनी भूख है कि वो एक हम्म दिन पूरे अपने किंगडम को लेकर डूबेगा। और तीसरा उनको लगता है कि ही इज नॉट केपेबल इनफ ओनली टू डू इट। So या that is the story. It's like he's just troubled and he wants to give it to the rightful person. हम्म Who's the rightful है? या या तो ये परफॉर्मेंस के बाद आशिम लगता है कि अब आगे जो आप करेक्टर्स करने वाले हो उस पे ज्यादा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि इसको आपने बोला कि यू हैव गिवन आई थिंक एवरीथिंग टू दिस रोल। सो अब आगे जो भी परफॉर्मेंसेस होगी या जो भी आप जॉनर सेलेक्ट करोगे वो किस बेसिस पे होगा, या किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं आपको अभी? So Richa, Abhi, actually, I have 4 releases coming हम्म this year, हम्म which I've already shot, which ओके are very different from this. ओके This is prehistoric. This is drama. हम्म This character is very different. Then the हम्म next one that's coming is I've done a show for Amazon called Ji Karda. हम्म Usme I'm playing a Punjabi pop star. So that's a ओके completely different character. Then I'm playing this hotelier in a show called Jane the Virgin. So it's an American series. उसका इंडियन अडेप्टेशन कर रहे हैं, तो वो वूट पे आ रहा है, ओके वो है। उसके बाद देन देयर इज अनदर शो दैट आई कांट, इट्स अ फिल्म एक्चुअली, आई कांट टॉक अबाउट इट येट, बट so basically there are very different characters now that are coming out. So it's like I wish people now would, like, accept me for, like, not just one particular role, but like also हम्म things that I can do, and just the versatility of my work. ओके। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी हाशिम। कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है, जो हम ओटीटी पे जितना देख पा रहे हैं उतना आई थिंक थिएटर्स में भी नहीं मिलता देखने को। बट जी डू यू मिस थिएटर रिलीजेस, और आपको लगता है कि कोई एक एकदम जबरदस्त ऐसी फिल्म आनी चाहिए, आउट एंड आउट कमर्शियल? यार, ऑफ कोर्स, आई मीन, बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने का तो मजा ही कुछ और है। आई हम्म मीन, आई रिमेम्बर जब हमारा प्रीमियर हुआ था अभी यहाँ, अभी हम्म जुहू में हुआ था। तो हम्म जो हमारे फर्स्ट 2 एपिसोड हमने देखे थे, वो जो बड़े पर्दे पे देखे थे, उसका तो मतलब हम्म दैट वाज समथिंग एल्स ओनली, यू नो। हम्म सो आई वाज टेलिंग हम्म, माय सेल्फ, लाइक, आई विश दिस दिस वाजंट अ सीरीज एंड इट वाज अ फिल्म, और ये या थिएटर में आई होती तो और मजा आता। या तो वो तो ऑफ कोर्स है ही, बट आजकल, लाइक, द क्लाइमेट इज डिफरेंट। हम्म नॉट मेनी फिल्म्स आर वर्किंग। ओटीटी हम्म में बहुत काम है, बहुत चीजें बन रही हैं, there's an influx of massive amount of content that's coming in. So it's like we're in a different climate right now, और ये भी एक अलग दौर है, ये भी अलग वक्त है। ये चले जाएगा आगे, फिर पिक्चरें बनेंगी, फिर एक वक्त बदलेगा, हम्म फिर हम्म लोग सिनेमाज जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड दैट्स, इसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी पे, बट आई वुड लव टू, of course, see a very big banger of a film in the theaters, because that's always fun. या सो आशिम, ये तो श्योर शॉट हिट है आपकी, सुपर हिट है ये ताज। तो अब हम आपको बहुत सारी विशेष देना चाहते हैं, और हम ना आगे मिलना चाहते हैं आशिम आपसे, बिकॉज बिल्कुल ऑडियो बिल्कुल इंटरव्यू इज ऋचा। रियली नॉट दैट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो मुझे मिलना था आपसे बिकॉज ऑफ दिस Of course, ताज। सो of course, आप whenever let's we can meet up whenever आप मेरे या पास अभी कभी भी आगे, we can plan it, and I would या love to see you, and thank श्योर। you so much for your